Students, my name is Sagar Pandya and today we are going to start with the first chapter of political science. One of the most interesting and one of the most beautiful chapter of our syllabus, that is chapter number 1, The World since 1991. Let's begin. So dear students, in 11th standard we started learning about the international developments that came across after 1945, that is after the end of the Second World War. And from 1945 till 1991 what all changes came across, उसके बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था. In this chapter we are going to look upon the changing era that have taken place in the post 1991 era. Now the fall of Berlin came across and Berlin Wall in November 1989, and eventually the disintegration of the Soviet Union came across. Now disintegration of Soviet Union. Originally, let us begin from the beginning. 1945 जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, let's begin from the First World War. So First World War started in the year 1914, ended in the year 1918. 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन फेल्ड. क्यों? बिकॉज डिक्टेटरशिप आया इन डिफरेंट कंट्रीज. फॉर एग्जांपल जर्मनी में अडोल्फ हिटलर आया, इटली में बेनिटो मुसोलिनी, स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंको, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूट्स आना चालू हो गए, तो यहाँ पे बेसिकली डिक्टेटरशिप आया इन ऑल दीज कंट्रीज. मतलब डिक्टेटरशिप आया फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन. नाउ लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? इट वाज फॉर मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. पीस, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए. बट ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ. सो 1918 के बाद लीग ऑफ नेशन बना, एंड आफ्टर 1918 जब भी लीग ऑफ नेशन बन गया, देयर वर डिफरेंट डिक्टेटर्स विच केम अक्रॉस. Different dictators which resulted into territorial expansion which led to problems resulted into fights, and fights resulted into war. This time it was not World War I, it was World War II. So when we talk about World War II, 1939 में, this resulted into 1939, starting of 1939 World War II. So World War II started in the year 1939, ended in the year 1945. As World War II came to an end in the year 1945, now World War II came to an end by मतलब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वी गॉट टू ग्रेट नेशन, टू सुपर पावर्स. एक साइड पे था यूएसए एंड दूसरे साइड पे था यूएसएसआर. नाउ यूएसए वाज एक्सप्रेसिंग और टेलिंग देयर थॉट दैट अबाउट कैपिटलिज्म. दूसरे साइड पे था सोवियत यूनियन. नाउ सोवियत यूनियन अनदर सुपर पावर. जर्मनी को हरा के रशिया. दूसरे साइड पे जापान, द अनदर सुपर पावर, उसको हरा के आया अमेरिका. सो यूएसए एंड यूएसएसआर, टू सुपर पावर्स केम अक्रॉस. सो 1945 में सोवियत यूनियन, रिमेंबर स्टूडेंट्स, 1945 में सोवियत यूनियन बना, दैट इज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक. The fall of Berlin Wall in November 1989 and the eventual disintegration. 1945 में यूएसएसआर बना एंड 1991 में खत्म हो गया. सो जैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइडेड ऑफ द डिविजन ऑफ द सोवियत यूनियन केम अक्रॉस, एंडेड द कोल्ड वॉर एरा. It also ended the East-West division of the world that was based on rivalry of the United States and its allies. Allies मतलब उसके जो supporting countries थे वो. Allies एक साइड पे एंड दूसरे साइड पे सोवियत यूनियन एंड इट्स allies. सो एक साइड पे जो डिविजन चल रहा था ईस्ट वेस्ट का, तो वो डिविजन अभी, राइवलरी अभी खत्म हो रहा है. तो द डेवलपमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, एज द चैप्टर नेम सेज, द वर्ल्ड सिंस 1991. तो बाद में क्या हुआ? लेट अस सी. The developments in the post-Cold War period can be analyzed through 5 major dimensions. First one, the end of Cold War and the rise of new states. Second one, emergence of unipolarity. Third one, human rights and humanitarian invention. Fourth one, terrorism. And fifth one, multipolarity and regionalism. Now let us go one by one in detail क्या है उसके ऊपर, and the entire chapter comprises of these 5 dimensions only. So first one, end of Cold War.
and rise of new states. The end of Cold War led to the end of an international order which was dominated by two superpowers. As we all know, अब भी हम लोगों ने देखा एक साइड पे था USA, दूसरे साइड पे था USSR. The USA and the Soviet Union, that is USSR. Again dear students, USSR मतलब Union of Soviet and Socialist Republic. It also saw the emergence of new states by that time after the disintegration of Soviet Union. Now Soviet Union जो था USSR, it comprised of 15 countries. 15 countries now were divided into their own independent countries. So उनका disintegration हुआ. That is the first point. First point क्या बोलता है? End of Cold War and rise of new state. Rise of new state मतलब कौन सा state? ये 15 countries जिनको इंडिपेंडेंस मिला वाइल डिसइंटीग्रेशन. सेकेंड पार्ट इज एमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी. पहले था बाइपोलर वर्ल्ड. व्हाट इज बाइपोलर? डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स. बाइपोलर, टू पोल्स, राइट. एक साइड पे था यूएसए, दूसरे साइड पे था यूएसएसआर. तो एमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड केम अक्रॉस. 1991 के बाद देयर वाज ओनली वन सुपर पावर लेफ्ट. The Cold War between United States and the Soviet Union came to an end, signaling the end of bipolarity. This led to the emergence of a unipolar world order. And unipolar world मतलब दो पोल्स थे, अभी एक ही बचा. कौन बचा? United States of America. The United States of America. Human rights and humanitarian intervention, the third point. There was an increasing awareness about human rights and also a rise in intervention of humanitarian purposes. So how human rights were now given, fundamental basic rights were given in two different countries जो पहले restrict किए जाते थे, अभी कैसे देना start किया, कैसे वो apply करना चालू किया, now वो important था with humanitarian intervention. Fourth one, terrorism. That is the nature of terrorism changed after 9/11, the attacks of 9/11, 11th of September 2001, the attacks which came across, also known as 9/11 attacks against the United States of America. I'll be showing you a picture, something like this. Yes. And the last one, that is multipolarity and regionalism. Multipolarity and regionalism, that is this phase primarily saw the rise of China and India, the growing importance of Indo-Pacific region. Basically multipolarity and regionalism, multipolar world मतलब सब जगह पे importance देना चालू किया, and regionalism हर एक अलग अलग region को importance देना चालू किया. The growing importance of Indo-Pacific region and the rise of China in the world मतलब world market में China का importance, Indo-Pacific region, Asian region, and also the rise of Russia under Vladimir Putin came across. So the development and the growth of regionalism brought in multipolarity in the world order. Regions and regional organizations started to become more important by that time. So these are the 5 dimensions. First one kaun sa tha? End of Cold War and rise of new states. Second one, that is emergence of unipolarity. Third one, human rights and humanitarian intervention. Fourth one, that is terrorism. And fifth one, that is multipolarity and regionalism. So let us begin with the first part, understanding the introduction. The end of Cold War and the rise of new states came across. We can see two important trends in the international relations, like Eastern European Revolution of 1989. The first is the assertion of the concept of ethnic nationalism based on right to self-determination, and second is the end of bipolarity. Now right to self-determination या ethnic nationalism. Ethnic nationalism मतलब तेरे culture के basis पे तेरा nationalism decide करना. Second one, self-determination, self-rule. And the second is bipolarity. Bipolarity मतलब the end of bipolarity came across. The world was divided into two parts and वो bipolar world अभी खत्म हो गया. On top of that, bipolarity existed because of the existence of two superpowers. That is, एक साइड पे था USA, दूसरे साइड पे था Soviet Union. Now there were two superpowers. Now later on, अच्छा वो टाइम पे जब भी दो सुपर पावर था, the world was divided into two centers of power. That is, यहाँ पे जब भी देखते हैं the disintegration of Soviet Union, it ended the center of the powers.
Therefore, the disintegration of Soviet Union meant the end of bipolarity in the world. जब भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, ऑफ कोर्स पावर चला गया, तो क्या हुआ? देयर वाज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड, सिंगल रूलर. So when we talk about the East European countries, dear students, the revolution of the East European states was a revolution of the growing aspirations of all the middle class countries. मतलब जितना भी middle class countries था in the world, इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज या ईस्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट, वो सब कंट्रीज को अभी फ्रीडम चाहिए था, बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटेड. वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल था, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल था. जितना भी यूरोपियन कंट्रीज जो वेल बिहेव्ड था प्लस डेवलप्ड था, वो सब आके उधर कैप्चर करता था. So they desired more freedom and economic well-being. They rose against the communist government that were controlled by the Soviet Union. So जो कंट्री सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था उसके अगेंस्ट, अच्छा, जो फोर्स कराता था उनको, किसके लिए? फॉर कन्वर्जन और कन्वर्टिंग देमसेल्व्स इनटू कम्युनिस्ट कंट्री. तो उन लोगों ने बोला वी डू नॉट वांट टू बिकम अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. बेसिकली जो कंट्रोल करता था सोवियत यूनियन, and they wanted to emerge themselves as a free democratic nation. And we all know what is democracy. Democracy is government of the people, for the people, by the people. Even within Soviet Union, the movement for political and economic freedom led to various states demanding more autonomy, eventually independence. मतलब पहले ये वो कंट्रीज थे जो दूसरे जगह पे, मतलब एक्सेप्ट सोवियत यूनियन, दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, उन लोगों को चाहिए था कि भाई हम लोगों को फ्रीडम दे दो, दैट्स इट, दैट इज, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो दूसरे साइड पे हम लोग जब भी देखते हैं, इवन विद इन सोवियत यूनियन, मतलब यूएसएसआर के 15 कंट्रीज का बंच जो है, उसमें भी उन लोगों ने डिमांड करना चालू किया कि भाई हम लोगों को इंडिपेंडेंस दो. Meanwhile, the ethnic identity of various people of region became stronger. This led to the demand for the creation of independent states based on ethnic identity. Ethnic identity, again, cultural identity. So here are some examples for this trend. In Europe, the pattern of creation of the new states can be seen as follows. That is, Czechoslovakia split into two states, that is Czech Republic and Slav Republic. Yugoslavia split into Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. In case of former Soviet Union, the new states were as follows: Armenia, Moldova, Estonia, Latvia, Lithuania, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया. तो ये सोवियत यूनियन का 15 कंट्रीज, यूएसएसआर का, आई रिपीट, आर्मेनिया, मोल्डोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया. तो ये 15 कंट्रीज वर इंक्लूडेड यूएसएसआर, दैट इज सोवियत यूनियन का 15 कंट्रीज. द ट्रेंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट स्टार्टेड बाय दिस टाइम, एंड जब ये चालू हुआ, दिस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म विच वाज बेस्ड ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब सेल्फ रूलिंगनेस, विच वाज ऑल्सो सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Some of the other new countries also came across, emerged as independent, like for example East Timor, which became independent from Indonesia, Eritrea, independent from Ethiopia, South Sudan, independent from Sudan. This trend of independence or the demand of independence on the basis of ethnic nationalism, मतलब ये जितना भी ट्रेंड देख रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग, ये जितना भी ट्रेंड देख रहे हो वो सब ethnic nationalism, कल्चर के बेसिस पे, is also seen in the following cases. Like for example, Catalonia still wants independence from Spain. Kosovo wants independence from Serbia. Its independence has been recognized by some other countries of Europe, but वो लोग खुद नहीं देते. And Chechnya wants independence from Russia. This was the first part. Coming to the second part, towards unipolar world. Now in 1990, Iraq went on to a war against Kuwait and established control over its territory. There was a global reaction. एक मूवी आया था इसके ऊपर, कौन सा था वो, एयरलिफ्ट, आई गेस उसके ऊपर ही था. There was a global reaction against it, and the matter was discussed in the United Nations. The United States took initiative and led a multinational force against Iraq. The war ended with Kuwait becoming free from Iraqi control. The then American President, George Bush,
considered this as moral victory and used the term New World Order. To describe the nature of global situation, this American action had received global support. मतलब हुआ क्या इसमें? कुछ सर फटाफट चला गया, बाउंसर गया, समझा नहीं. United States took initiative to led a multinational force against Iraq. क्यों? Because इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, तो इराक वेंट ऑन फॉर कुवैत. चलो समझा, कुवैत के ऊपर अटैक किया टेरिटरी कंट्रोल करने के लिए. यूएसए ने सपोर्ट किया किसको? कुवैत को, मतलब इराक के अगेंस्ट. द वॉर एंडेड विथ कुवैत बिकमिंग फ्री. कुवैत को फ्री हो गया किसके? इराकी कंट्रोल से. अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश कंसिडर्ड दिस एज अ मॉरल विक्ट्री एंड इसको एक टर्म दे दिया जिसका नाम था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. This American action had received global support, including the Soviet Union. मतलब ऐसा टाइम आ गया था जब भी अमेरिका ने कुछ काम किया एंड पहली बार सोवियत यूनियन, याद है, बाइपोलर, 2 अलग अलग पोल्स पे, एंड ये अच्छा काम कर रहा है, दूसरा तारीफ करेगा. हुआ. This American action had received global support, including the Soviet Union, China countries and NATO. NATO मतलब North Atlantic Treaty Organization. अभी बचा लोग, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री या अमेरिका को सपोर्ट करने वाले जितने कंट्रीज थे उनको मिलिटरीली सपोर्ट करने के लिए ये बनाया था. क्या नाम था? NATO, North Atlantic Treaty Organization. So countries of NATO supported it. Soviet Union supported it. China, being a communist country, supported it. Israel supported it. Arab states, including Saudi Arabia, also. The Soviet Union, which was facing internal problems, disintegrated in 1991. Not much opposition was possible against United States, and eventually the meaning of the term New World Order, which implied American dominance and leadership in the matters of security, was accepted at the global level. So मतलब सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? दैट इज, उसका बोलने का मतलब वही था, दैट इज अमेरिकन डोमिनेंस एंड लीडरशिप इन द मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी ग्लोबली एक्सेप्ट करना चाहिए. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. दिस वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन विच वॉज स्टार्टेड फॉर यूनिपोलर वर्ल्ड, एंड उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारे कॉजेस चालू हो गए. लाइक फॉर एग्जाम्पल यूएसए emerged as a dominant country. American dominance had political and economic dimensions. Politically, the American model of liberal democratic governance was readily accepted and adopted by several post-communist states and Eastern European countries as well. So USA being a dominant country, उन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले उन लोगों ने इकोनॉमिक डायमेंशंस पे अटैक किया, कंट्रोल किया. जितने कंट्रीज, वो 15 कंट्रीज से बाइफर्केट होकर निकल रहे थे, उनको भी डेमोक्रेसी सिखाया, उनको भी सपोर्ट देना चालू किया. द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वॉज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी. नाउ सेकेंड टाइम गुड गवर्नेंस क्यों किया? बिकॉज एक और वर्ड आने वाला है जिसके लिए मैं ऐसा करने वाला हूं. दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर. Now, what is it all about? Let us see. The concept of good governance was linked to democracy. In economic sphere, socialist system of economy was given up by most of the country. मतलब एक economic sphere के हिसाब से तेरा जो society है वो कैसा रहेगा, तेरा trade decide करेगा. And hence one of other aspect of American domination was the use of soft power. Now, what is this soft power all about? Soft power is when you influence other countries without use of military force. That is called as soft power. किसी को influence करना. The influence is spread through economic way, influence is spread through social way, influence is spread through cultural way, and other similar means also. The next part that we are going to understand is human rights and humanitarian intervention. Now, the process of disintegration of states and the creation of new states was not always peaceful. Like for example, अभी हम लोगों ने देखा about different divisions, like for example चेकोस्लोवाकिया का, या हम लोगों ने बहुत सारे अभी अलग अलग डिविजन्स देखे थे विथ रिस्पेक्ट टू चेकोस्लोवाकिया, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब स्लाव नेशन बनाया था, विथ रिस्पेक्ट टू यूगोस्लाविया, विथ रिस्पेक्ट टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. तो एवरी टाइम वो पीसफुल नहीं होता है, कभी कभी देयर विल बी वायलेंस. So the process of disintegration of states and creation of new states was not always peaceful. In Yugoslavia, for example, हम लोगों ने देखा था ethnic nationalism चालू हुआ था, मतलब कल्चर के बेसिस पे nationalism, कल्चर को extreme love देना. In Yugoslavia, for example, there was a lot of bloodshed in Bosnia, Herzegovina,
between different ethnic groups. Conflicts also occurred in Chechnya, East Timor, and Eritrea Islands. It is in the response to such situation that people started to be concerned about the violation of human rights. अगर फाइट बैक कर रहे हो, अगर फाइट बैक कर रहे हो, दोनों लड़ रहे हो, सो वो टाइम पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल. If you have political problem, if you have social problem, lado. But there should be not any kind of restrictions on human beings. There should be no violation of human rights. The United Nations, an important global organization, would intervene, that is interfere in the countries to prevent conflict from escalating, that is removing. This was one of the main tasks of United Nations peacekeeping force. तो United Nations peacekeeping force क्या करता था? तो they used to stop the war. They used to escalate the matter के भाई बस करो, अभी इससे ज़्यादा लड़ो मत. Hence, in the post-Cold War era, the United Nations continued to intervene in conflict situations about a peaceful resolution of the dispute. But now, rationale for intervention was not just to stop the ongoing war, but also to prevent the reoccurrence. मतलब war तो हुआ तो ठीक है, but वापस ये war नहीं होना चाहिए. अभी तो restrict कर दिया हमने, but वापस similar routes, वापस उसके seeds डालना मत चालू करो. In future, maintaining peace and protecting the human rights of affected people, the United Nations intervened in Cambodia, Somalia, and Yugoslavia for this purpose. This increasing awareness about human rights and their protection in international law, this gave rise to the protection, this gave rise basically to the new phenomena, that is the protection of rights in the form of humanitarian intervention. The 1990s are sometimes seen as the golden age of humanitarian intervention. This is the golden age कि भाई humanitarian intervention सबसे ये golden age रहता है, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने witness किया है. That's it from my side, dear students. In this particular video recorded lecture, we studied about 3 parts. That is, first thing हम लोगों ने देखा था about end of Cold War and the rise of new states. Second one हमने देखा था emergence of unipolarity, and the third one we started learning about human rights and humanitarian intervention. In the next time, we are going to study the next 2 parts, that is terrorism, multipolarity, and regionalism, and also we are going to listen to a story about with respect to 9/11, and also we are going to learn about different organizations that is at international level. So stay tuned, like, share, comment, and subscribe to the channel. All the best. Bye bye.